चल भाई सुल्तान आजा, कैंटीन चलते हैं, आजा। यार जलाल टाइम नहीं है बिल्कुल ही। बॉस ने 4 वेबसाइट्स बोली हुई है टेस्ट करने के लिए, अभी एक हुई है और डेडलाइन भी बिल्कुल क्लोज है। तो ये कर क्या रहा है? यार मैं ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ, लेकिन बार बार कोई ना कोई फ्लो ब्रेक हो जा रहा है। उसको डीबग कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, बहुत हेक्टिक हो रहा है। ये चला जा। सारा कुछ तुम मैनुअली कर रहा है? और क्या, तुझे मैनुअली वेब कर। स्पेक्टर का नहीं पता? वेब सेक्टर वो क्या है? एक एजेंटिक एआई टूल है, ठीक है। अभी जोन सी वेबसाइट तू इधर टेस्ट कर रहा है ना, इसका लिंक आपने कॉपी कर देना है और उधर पेस्ट कर देना है। उसमें सारी वेबसाइट को टेस्ट करके आपको एट द एंड एक रिपोर्ट जनरेट कर देनी है। सारी टेस्टिंग, टेस्ट केस भी खुद लिखेगा, स्क्रिप्टिंग भी खुद करेगा और टेस्टिंग भी खुद करेगा? सारा कुछ खुद करेगा। वो कैसे? आजा दिखाता हूँ तुझे। Alright, first log into the application. After logging in, you will land on the dashboard where you can see an overview of your recent activities. Now go to the new test section, paste your website link here, select the AI model, either Gemini or Claude. Then choose the testing type. For this demo, I will select single page test and click on run QA test. Now WebSpector start processing the website in 4 stages. First, observing the page, then planning the tests, next executing them, and finally generating the report. Once the test is completed, the results are shown here. You can see that multiple issues have been detected. For example, a major issue where email field is set as text instead of email, an accessibility issue with missing focus indicators, and a usability issue where no success message appears after form submissions. There are also several other issues identified in the report. All issues are clearly explained with suggested fixes. And that's how WebSpector makes website testing fast and efficient.